Good morning, Shailendra sir. Am I audible? यस गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। यस Yes, sir. Shall we start, sir? यस वी कैन। आई थिंक राहुल सर इज आल्सो कमिंग। आई थिंक विद इन few minutes राहुल तनेजा जी is also coming, I think. Okay, sir. Shall we start, sir? Hello. Hello. Yes, sir. Shall we start? Shailendra sir, shall we Yes, start? हाँ yes, जी please. यस यस। Please, Devan. Yes, Devan. Yes, sir. Welcome, Dr. Shailendra. A very good morning to respected principal, sir, teachers, my colleague, esteemed guest speakers, students, and all my dear friends. I am Devkant Sharma, Associate Professor, and on behalf of Chaudhry Devilal College of Pharmacy, I welcome you all in an online webinar entitled Role of Intellectual Property Rights for Academia. As we all know that today intellectual property right awareness is critical to shaping an environment that is conducive to fostering creativity and innovation in the country. Today, our first keynote speaker is Mr. Shailendra sir. I welcome you, sir. Thank you sir. Before proceeding further, I would like to introduce our speaker of the day. Mr. Shailendra Singh is currently working as NIPEM officer and examiner of patents, examiner of International Search Authority, Group A Gazetted Patent Office, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. Sir is working in patent office since 2016. Moving to educational qualification, Sir has completed his BTech in Mechanical Engineering from SRM University, Chennai. I welcome you, sir. Now it's over to you, sir. Please start, sir. Okay, thank you for such a warm welcome and very good morning to all of you. First of all, and very good morning to Dr. Rahul Taneja ji as well. So first of all, I would like to share you that this program has been done under the NIPAM mission, under the Ministry of Commerce and Industry, and the basic idea about this particular program is to aware all the students and other researchers, scholars, and faculty members about the d- uh, different IPR thing that we have in our system. First of all, we need to understand that what is basically IPR, intellectual property right, which is, and in Hindi we call it as Bodhik Sampada. So, intellectual property right is a intangible right, means something which we cannot see or feel, like other rights that we have, like other physical rights that we have, like land, or we have buildings, or we have other cars and other things. In the similar way, we have this different intangible property right, and we can do the similar thing that we used to do with the physical property, like we can sell these things, we can give these things on rent, we can even lease our intellectual property. So it's very much important to understand the role of these intellectual property in the present scenario. So even the government is also taking initiative to aware the students, like the government has also started multiple programs
like this NEPAM or Kapila or many others, just to motivate the different people in this country and to make the business person, to the corporate people, the people who are starting their startups, or even the student faculty researchers, to understand their intellect thing, to understand their creativity, to have the hold and to have a monopoly over their things. So first of all, we need to understand one thing, that whenever any country grows, like whenever a country's economic structure changes, like we are seeing India, where earlier the economic structure was socialist, and now the presently the country's economic structure is moving towards the capitalistic type of economy. And here most of the people are now started to have their own businesses. They are having their have started doing startup and other things. So whenever people start doing their own business, or the startup, or have started any company, then we need to first understand the value of these intellectual property rights. If we don't protect these rights, then there will be a loss of economical value, as well as uh, there will be loss of hold over our own business. Other will start copying things that you are developing, you are manufacturing, or maybe you are creating. So it is very much necessary in the present scenario to understand this intellectual property rights. And there are so many intellectual property rights and things that we have in our system. We are very new examples that we should see, like some examples of copyright we have came across in the past. Some of these are like kacha badam, pakka badam, and some are like bachpan ka so these people are सर very शैलेंद्र much. सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, इसमें ना पीपीटी नहीं आ रही सर आपकी। I have not started the PPT yet. I'll start it. ओके सर। Okay. So these are the different intellectual properties that are related to copyright, and people are not aware about their own creativity. Now the person who may be the actual proprietor of these things, these creation, like we have in Kacha Badam or in other cases. Now these people have never understood the value of their own creativity. They couldn't get the actual value of their creativity in the real sense. The producers or the music composers or other people may have given them a very few amount of very less amount of money for those creativity, and the actual income they have kept it with themselves only. So it is very much necessary to understand our own creativity and how we can utilize these things. So now I would like to share the PPT with all of you. Now is the PPT visible to everyone? यस सर। Okay, thank you. So this is a program which is done under the National Intellectual Property Mission Awareness Mission under Ministry of Commerce and Industry. And first, we need to understand, see the what are the different intellectual properties that we have, and these are patents, design, trademark, geographical indication, copyrights, and semiconductor integrated circuit layout designs. And here it's we are seeing that say a product from an Apple. Now we can relate so many intellectual property with a single product. Now this Apple laptop is having almost 5 different IPRs linked to it. Now the LED, the other technology that is used to make this product is a patented technology, and the outer case of this laptop is a design product, and the Apple logo, that sign, that's a trademark sign. The user manual of this laptop and the programming that is used is a copyrighted thing, and the IC of this the layout of this thing, IC chip that is used in this laptop is a SICL design. So here we need to understand that we can correlate so many things, so many different IPRs in with a single product.
It's not like that if it's a product we can only register it under a patent, or we can only register it under design, or we can only have the trademark. No, we can register our product in multiple IPs. The only thing is that we need to understand and identify the different IPs that we can connect with our product or device. So what is the importance and significance of this IPR? It will help you protect, and it will exclude others from making it, and it will also help a person to get a better commercial value and to earn. About the things of registration, that who are the people who are going to register for this thing. First of all, a businessman, it's very common that for a person who is going to do any business, then this IPR registration is very much important, because it will help them commercialize the things. It will also help them create a brand value, and it will help them earn more out of this registration, this monopolistic and this exclusive product. And for the second people who can go for this thing are the common people, like the researcher, the academicians, like, or maybe anyone, whoever who wants to do it. The thing is that it's not necessary, if you are interested in doing only a business, then only you have to go for this thing. No, it can be a thing for pride, or maybe upgrading your CV. Different people can go for this registration for their different utilization, for their different purposes. So the first IPR that I'm going to introduce you all is a patent. So what is basically a patent? Patent is basically a sovereign or state right. It means if you are having any patent in India, then it only will be protected in India only. It's not like that if you are having a patent in India and you cannot stop a person who is living in US, and if they are copying the same, if they are producing the same product in US, you cannot stop that person in any way. So if you think that you are having a business in multiple countries, like if you have a business in US, China, UK, or India, then you have to file the patent in all the different countries wherever you are having the business, to protect your technology or your product. So second thing is that the patent is given for a period of 20 years. So if you are filing for a patent today, then from the date today onwards up till the next upcoming 20 years, it will become your exclusive property. Means from the today onwards up to the next upcoming 20 years. And the thing is that after 20 years, you won't have any exclusive rights over the product. Means after the 20 years, anyone or whoever who wants to use your technology or product, they can use or manufacture, or they can utilize that thing. These are the different past invention that we have in the past. Like we have the telephone, we have a phonograph, aeroplane, rabies, or XYZ. There are so many inventions in the past. The thing just that I just want to aware you all that most of the fundamental theories and invention are already being done in the past. It's not like that you need to produce anything which is very much novel or very much out of the box. We can invent new things, we can develop new innovation in the known prior arts, we can upgrade the known products as well. Like we have the telephone. Now earlier the telephone that we used to have were the wired phones. Now after the wired phone, we came across with the cordless phone. After that we have these cordless phone, after cellular phones, mobile phones with the keypad, and after that we have the touch phones. After these touch phones, we have this single sim, dual sim phone. Now the latest technology is eSIM phones. So these are the upgradation in the known technology. So we need to understand one thing, that it's not like that we have to create something very much novel, very much different, which is not known to everyone. We can make the different changes, or we can innovate the new things in the known technology, like I have told you in this telephone field. So the thing is that we need to find out the different problems that are going, or maybe the new features that we can add in our known prior art or known technology. Now here we have so many examples related to patents. Now see this particular thing. Now it's a very simple innovation, that
this cap. Now, what is this cap doing? This cap is just protecting a child face from getting wet. Now, this simple innovation, this simple idea, the basic idea behind patent is that we need to, or any innovation is that there should be some innovation, or there should be some kind of solution to any known problem. Means the your idea, your product should be solving some problem in a technical way, or maybe through a product. So this problem solving solution, this thing is can be said as a this innovation, and it can be patented. So in this way we can create so many products in this field, and we can add new innovation. Like we have so many very simple innovative ideas in India, like the idli stand. It's also a very innovative idea. Idli stand, it's a patented product earlier. And other products are like we have the safety pin. We have, so there are so many simple known things that we have. What is the basic idea behind this patent or this innovation is that we need to create any product or technology which is solving any human problem. So these are the basic some clips or snaps from the news article, and this basically just to acknowledge you all, just that each and every company, whoever wants to uh, uh, fi- go whoever wants to bring their product in the market, they should first file the product in the for the patent thing. The reason is that they don't, neither any company or neither the government wants others to copy their technology or their product, anything, any of the technology they are disclosing, or any product they are going to bring in the market. So each and every company, um, whether it's a e-commerce, or whether it's electronics, or whether it's a mechanical engineer, and each and every company, a pharmaceutical company, they first do the patent filing before introducing any product or any medicine or anything in the market. Even the government has to do this thing before introducing any product in the market. About the patent application filing, uh, about this patent filing thing, there are multiple forms that we have in the patent filing. Like we have almost 30 forms in the system, but all the forms are not required to be understood. So the basic five forms that we need to understand in the patent filing is form 1, form 2, form 3, form 5, and form 18. All these basics, these five basic forms are the are required for anyone who wants to file for a patent. Other forms are useful, but only when there is a discrepancy, or if you want to change anything, if you want to change the applicant, or any inventor or address, or these things if you want to do, or if you want to make any correction in the known in the specification, then other forms comes into picture. But if you want to file anything, then these are the basic forms that one has to file. So about the form 1 is basically a form in which you have to just give the basic information about the details of the application, applicant, and other things. And the second form is form 2, and this form is basically about the specification. Means what you are going to make. You have to disclose your invention in this particular form. Means you have to give the details about your invention. And the basic idea about disclosing is that the best way of disclosing any invention, the best way to draft any invention or any the thing is that you should disclose your invention in title, background of the invention, particular of the drawing, brief description of the drawing, brief description of the invention. So if you are disclosing your things in this particular subheadings, then it will looks really nice, and it is easy to understand those things. So this is the format in which you should disclose your invention in this form 2. And the other form is form 3. Now in form 3, you just have to give us the details regarding regarding if you have
done any foreign filing, means if you have filed any invention in other countries, like if you have already filed any invention in US or UK, or if you are going to file any invention in US or UK, and then you have to just inform the office that in those countries I have filed the particular file, and you have to give those details in this form 3. After this, there is a form 5. Now what is this form 5? Basically the form 5 needs comes into the picture because sometimes whenever any inventor, like let us assume that someone is making anything, someone has given any idea, but he has the idea of that what he's going to make, but he did not understood that how to complete the process of making this particular thing. So to complete the invention, to complete the thing, one needs any other person's help, or there is an addition of any new inventor in that particular thing, particular invention. So in this particular case, you need to inform the office about the who are the actual inventor after the completion of the thing. So for that purpose we have this form 5. So in this form 5 you have to give all the names of the different inventors who are the part of the invention. So after filing all these four forms, your application will be published in the Indian Gazette, and after the publication, you have to you can go for this form 18 thing. So after publication, your application will be examined only if you have filed this form 18. Uh, for the timeline for this form 18 is 48 months, means you have to file this form within a period of 48 months from the date of filing or from the date of priority. So these are the different forms that one has to file. So usually what I have seen that in the academic field, that some people have a misconception that after the publication the patent is granted. No, publication does not make any sense if your thing is not granted. So if you, it's like if publication is like publishing anything in a newspaper, like आपने कुछ भी न्यूज़ जो है आप चाहते हैं कि if you want to publish any news in any newspaper, you go to the news न्यूज रूम एंड आपने उनको जो अपना आर्टिकल दे दिया, उन्होंने वो पब्लिश कर दिया. Similarly, आप जब भी after these four forms, your application will be published in the Indian Gazette, and उसका कोई ऐसा actual significance, there is no significance of these publication until and unless the thing has been granted, and that happens after the this examination process. So if anybody says that my patent is published and it's still not granted, that doesn't make any sense. So the complete thing is only useful when it is granted. Now these are the different fees in the IPR filing and this patent filing. uh, for the form 1 this is 1600 rupees, and the form 18 is शैलेंद्र सर, एक क्वेश्चन है मेरा सर. एक कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूछते हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फीस 1600 रुपए है कि 8000 रुपए है सर. ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी पेटेंट ऑफिस के द्वारा. नहीं तो नहीं, मैं चाहता हूँ आप सबके लिए उसको क्लैरिटी कर दें. सभी जो भी इंस्टीट्यूट है, वेदर इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एनी इंस्टीट्यूट विच रिलेट्स टू एनी एजुकेशनल फील्ड, लाइक अगर जैसे जो ये हम जिस क्या कहते हैं, जैसे हमने जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. जैसे देवी लाल कॉलेज जो हम जिसमें अभी ये कर रहे हैं वेबिनार, अगर वो अगर फाइल करते हैं तो उनके लिए फीस 1600 रुपीज ही होगी, उनके लिए 8000 नहीं होगी. 8000 सिर्फ उनके लिए है जो इन 4-5 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं. उसमें स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और नेचुरल पर्सन. तो बेसिकली कोई भी पर्सन लाइक इंडिविजुअल, ये इट कैन बी अ सिंगल पर्सन और मे बी 100% इंडिविजुअल, एनी नंबर ऑफ पीपल, जो भी अगर फाइल करते हैं, फॉर देम दिस इज द फीस. For the startup and small entity, the person has to provide us the certificate which is given by the government कि वो startup है कि small entity है, वो certificate उनको government के through उनको मिलता है, and that they need to give to us.
For this natural filing, for this thing, for the other people who are not belong to this particular category, the fee is 8,000 and 20,000. Okay, sir. About the Thank you, filing sir. procedure, there are two ways to file anything in this patent. If you can go for the hard copy, or even you can go for the e-filing. If you want to do the hard copy filing, then you need to file all the forms in the printed form in the patent office itself, and which is situated in four locations, and that is New Delhi, Kolkata, Mumbai, and Chennai. And e-filing, you can go, you just need to go through this website, and you just have to, after going on this particular website, this particular page will open, and you just have to sign up, and you will get the username, password, and just you have to log in, and you can see the different forms, and you can file the things. Now, about something about the expedited examination. Usually, we need to face certain issues, that for certain things that people have a thought that it takes a lot of time to complete the process, means it takes 4 or 5 years to get the patent. But now, anyone who wants to get a patent at the earliest, who want to expedite any process, they can go through this particular thing. For the expedited examination, the form is 18A. For the normal filing, for the normal examination process, it is 18, and for the expedited examination, it is 18A. Now, the things about the expedited examination is that you need to be eligible, and the eligibility criteria is this: if you are a startup or a small entity, or if any of the applicant is a female, or if you are a government institute, if it means if you are a government department like DRDO or ISRO, so like these, or if you have chosen India as a ISA or IPA in PCT. So if you fall under these different categories, you can go for this expedited examination. Now I'll explain about the India as a ISA IPA in PCT. I will explain this thing in the upcoming slides. Uh, Whoever thinks that I want to go for this expedited examination and I do not fall under these categories, now for others who are not in this category, they can choose this thing: India as a ISA, IPA, and PCT. Now, what is this thing? So basically, there are three ways in which any patent process goes through. Now, in the three ways of filing is ordinary filing that I have told you. So whatever I have told you is basically an ordinary way of filing. The second thing is the convention filing. The convention filing is almost similar to ordinary way of filing. The only difference is that if anyone is filing any application इन एनी अदर कंट्री प्रायर टू इंडिया, मींस अगर आपने कोई एप्लीकेशन जो है यूएस, यूके या फिर चेन्नई या चाइना या फिर किसी भी डिफरेंट कंट्री में फाइल करी है पहले इंडिया से, एंड नाउ यू वांट टू फाइल द सिमिलर एप्लीकेशन इन इंडिया, देन फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू फाइल दैट एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इन दैट कंट्री। मींस आपने वहां पे जब फाइल करा है, वहां से 12 months के अंदर आपको इंडिया में भी फाइल करना पड़ेगा, and the other processes and everything is almost same, that is that one has seen in the ordinary filing. Now the third filing is the PCT filing. What is the basic difference between PCT filing, why we should file this thing, that I'll explain. Basically, PCT filing is that WIPO, World Intellectual Property Organization, is an organization in which there are multiple countries which are the member of it. Means it's an organization जिसमें बहुत सारी countries जो है member हैं, and out of these different countries, few countries are ISA and IPEA. What is ISA, IPA? A few countries are international search authorities or international preliminary examining authorities. Out of these different members, these few countries who are ISA and IPEA, India is one of the country which is ISA and IPEA. Now, if anybody wants to go for this PCT route, they have the full freedom to choose their ISA or IPA. मीन्स अगर आपको इस प्रोसेस के थ्रू आना है तो आपके पास अपनी चॉइस है कि आप आईएसए के थ्रू किस कंट्री को आईएसए चूज करते हैं, मीन्स कहाँ से आपको एक्चुअल में रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री को आप आईएसए चूज करेंगे वो आपके लिए रिपोर्ट बना के देगी। अगर आप इसमें इंडिया को चूज करते हैं ऐसे आईएसए आईपीए फॉर दिस प्रोसेस, then you become eligible for this
एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, मतलब अगर आपने इंडिया को ISA IPA चूज किया है तो आप एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो अगर आपको लगता है कि आप सिंगल मैन या मल्टीपल मैन है जिसमें कोई फीमेल एप्लीकेंट नहीं है, या फिर आप कंपनी है कोई और आप जो है स्टार्टअप या स्मॉल एंटिटी में एलिजिबिलिटी नहीं करते, तो वो कोई भी इस प्रोसेस के थ्रू फाइल कर सकता है। Now the another thing about the PCT filing is that in the ordinary and convention filing you need to you will get to know all the different things about your invention, means कि आपकी invention जो है वो patentable है कि नहीं है, you will get to know at the end of the process, means your patent thing, your whatever you are filing for a patent will be is patentable or not, you will get to know at the end of the process, means after the examination and everything. And if you have filed this particular thing in let us assume 5 countries, and at the end of the process you get to know कि आपका process या जो भी आपने patent के लिए file किया है वो patentable है ही नहीं, then you will going to lose your money in all the different countries, क्योंकि शायद हो सकता है आपको कहीं भी patent मिले ही ना, क्योंकि आपका जो भी आपका प्रोडक्ट या प्रोसेस है दैट इज नॉट नोबल, इन्वेंटिव एंड इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल। तो अगर वो क्राइटेरिया में फॉलो नहीं हो रहा है, वो यूजफुल नहीं है, तो हो सकता है कि आपको एंड में आपको जो भी फीस है या जो भी है आपको लॉस हो मनी में। So to prevent this thing, you can go for this PCT process. What will happen in this PCT process? You will get to know about this particular technical report at the first. Means आपकी जो है सबसे पहले आपको एक technical report मिलेगी, which will disclose everything about the thing that you have filed कि ये वो patentable है भी या नहीं, that you will get to know in this PCT filing at the first। कि आपने फाइल करी, उसके बाद क्या होगा, वो जो भी आप ISA चूज करेंगे कंट्री, वो ISA कंट्री आपको एक रिपोर्ट भेजेगी। Now on the basis of that report you can understand about your things, means कि आपकी जो इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल है, तो अब मैं उसको whether I should go for this patent grant in other countries or not, कि मैं उसको फाइल करूं, आगे का प्रोसेसेस करूं कि नहीं करूं, you can easily understand through this report। Now, what is the ISA filing fee in India is about 2,500 rupees. So it's not much, and whoever who wants to go for this expedited examination, they can choose India as a ISA, and it's just 2,500 rupees additional you one has to pay, और उसमें ये सारे benefits भी add हो जाते हैं। Now about some of the screening and classification in these patent field is that some of the application will not get the patent which belongs to these atomic energy or defense related things. So if your application is related to defense or atomic energy, what we will do first, we will send your application to the concerned department. Let us assume that if it is related to the atomic energy, then we will send it to atomic energy department, and if they allow and if they say that this is not related to this act and this thing, then only you will be granted the patent, else your application will not be approved। Now, what are the different examination process that your application will go through? The different processes are formal examination, means we will go through the different forms and everything, whether you have filed everything on time and whether you have followed the fee and everything. And the second report is on the technical examination, means we will give you a report that whether it is patentable or not patentable, and there are 3 checks that your application will go through, and these 3 checks are novelty, inventive step, and industrial applicability। First examination report, after the examination we will send you a FER, first examination report, and this particular first examination report will consist of the objection and different things that we will point out कि ये आपके objections है, ये requirements हैं, और these are the different citation that is disclosing about your invention, the document D1, D2, D3 और XYZ, these जो particular prior art है, these are already disclosing about your invention, that everything we will send you on this FER report। Now, what is your duty? Now, after getting this FER report, you need to send us the reply within a period of 6 months। 6 months में अपना reply देना, you will have to tell us that why your things are novel or inventive, why it is not disclosed in the prior art, that you will have to tell us that what is the inventive feature that is actually not being not there in the prior art that we have cited, so that everything you have to tell us।
Now, after getting the reply, if we think that everything is complied and everything is done, then you will be granted a patent. If not, if we think that there are still some uh, issues with the application, if we still think that it is not novel, inventive, and or industrially applicable, then we will ask you for a hearing. Now, in the hearing, what will happen? We will have a technical discussion with the person who is an applicant or inventor, or so. After the discussion, it can be a video conferencing or maybe a face-to-face discussion. And after the discussion, if we find out that now you have properly disclosed, told us everything, and if we think that you have given the proper things, that your thing is novel, inventive, and everything, then you will get the grant. Else, if we still think that it is not complied and everything is not okay, then your application will be rejected. What are the different timelines in the patent filing? For the provisional to complete filing, it is 12 months, and for the request for examination is 48 months, FER 6 months. So for the different things, we have the different filing, uh, different timeline. Now, the new two things about the patent is the pre-grant and post-grant that I have not told. Now, in the pre-grant and post-grant opposition, what is this basically? Means after the publication, your application, your invention is disclosed to everyone. Means anyone can see. Like, let us assume that Hyundai and Maruti, these are the two automobile companies in India. Let us assume that Maruti has given any patent application and anything for a patent. And after the publication, Hyundai R&D thinks that this particular application is already been, the product is already been used by our company, or maybe already filed by us, or maybe aware to them. So what they can do, they can go for this pre-grant opposition against the Maruti, and they will say that this has already been disclosed by us, and even they can go for the post-grant opposition after the grant of the patent as well. So this is all about the patent and patent filing and everything. Now, if anybody has any question, you can ask me about the patent and other processes, and other intellectual properties will be disclosed by, will be tell by the Dr. Rahul Taneja. Any questions? Okay. Sir, there is Thank you, no Dr. question Shailendra. in the live chat. If anybody has any question, you can ask me at the end of the this webinar as well. After the end of the Rahul sir's thing, you can ask the question. So Rahul sir, you can Uh, Thank you so much, sir, for providing us information regarding the IPR and latest innovations. I hope your lecture will prove quite fruitful for the listeners in the coming future. Once again, thank you so much, sir. thank you, thank you. Dr. Rahul Taneja, sir, am I audible to you? Yes, Devkan, please proceed. Hello everyone, welcome back to the second technical session of webinar on role of intellectual property rights for academia. Let's move forward with our second keynote speaker, Dr. Rahul Taneja. Dr. Rahul Taneja is working as scientist, Department of Science and Technology, Government of Haryana, Panchkula. He holds professional degrees including Doctorate of Philosophy in Pharmaceutical Science,
He has own intellectual property in which four copyrights, two industrial design, three patent filed in his own credibility. He has also awarded as significant contribution in healthcare by AIMS New Delhi. Sir has 35 publications in different journals of repute. He has already delivered more than 250 specialized lectures in various national and international conferences. Once again, I welcome you, sir. Now it's over to you, sir. Please proceed. Thank you so much, Mr. Devkant. First of all, thank you, Dr. Anurag Bhargav, sir, for inviting me for delivering the lecture on intellectual property rights. Mr. Shailendra Singh, You're welcome, sir. patent examiner, Devkant, Abhimanyu, thank you, sir, thank you, and other faculty members of Chaudhary Devi College of Pharmacy, dear students. As Dr. Shailendra sir said about the intellectual property rights, there are very different parameters of intellectual property right to identify, like patent, trademark, industrial design, geographical indication, and he's elaborated about patent rights, especially about the expedited examination. So this is my request to all the students and faculty members, at least you can file a one patent application. आप अपना एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, डिजाइन तो आप लोग फाइल करते हैं, आप पेटेंट एप्लीकेशन में फाइल करें, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट ए एग्जामिनेशन रिपोर्ट बाय द पेटेंट एग्जामिनर. मींस आपकी एक रिसर्च कहाँ पर एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड वाइड, वो आपको एक इवेल्युएशन देगी आपकी रिसर्च की, कि आपने जो काम किया है, जो रिसर्च की है, वो वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर नोवेल्टी कंसेप्ट कितने हैं, इन्वेंटिव स्टेप्स कितने हैं. पहले क्या थी, इसमें गवर्नमेंट फीस लगती थी अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे फाइल करते हैं, 8,000 रुपीज़, और प्लस अर्ली पब्लिकेशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस, ये कुल मिला के आपको 41,000 रुपीज़ पे करने पड़ते थे अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे पेटेंट फाइल करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2021 को दिसंबर के अंदर ये अमेंडमेंट्स हुई कि आपकी फीस रिड्यूस करके 41,000 से 8,100 रुपीज़ कर दी है, जिसमें 1,600 रुपये गवर्नमेंट फीस है, 2,500 रुपये अर्ली पब्लिकेशन के हैं, और 4,000 रुपीज़ हैं एग्जामिनेशन के. और अगर आप कोई फीमेल इन्वेंटर हैं, वो एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन कर जाते हैं, तब आप ₹8,000 पे करके आपकी पेटेंट एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक पे भी कंसीडर कर सकते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी आप फास्ट ट्रैक पे कंसीडर कर सकते हैं. मीन्स यू विल गेट ए पेटेंट राइट्स विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग. जो पहले टाइम लगता था 5 से 6 साल, अब विद इन 1 year आपके पास पेटेंट के राइट्स ग्रांट हो जाते हैं. इंटेलेक्चुअल मीन्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड प्रॉपर्टी, जो आपकी अपनी है, राइट्स जो उसके ऊपर अधिकार दिए जाते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, टेंजिबल प्रॉपर्टीज एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. टेंजिबल प्रॉपर्टीज, आपके पास अपनी गाड़ी है, बंगला है, मकान है, जैसे सर ने बताया आपके पास स्पेसिफिक राइट्स हैं, बट यू डोंट हैव एब्सोल्यूट राइट्स ऑन योर प्रॉपर्टी. मीन्स अगर आपके पास अपना मकान है तो आप उसे वहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते. अगर आपने रेजिडेंशियल में लिया है तो आप रेजिडेंशियल वर्क कर सकते हैं. अगर आपने कमर्शियल लिया है तभी आप कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर कर सकते हैं. मीन्स यू हैव ए लिमिटेशन ऑन योर टेंजिबल प्रॉपर्टीज. सिमिलरली वी हैव इंटेंजिबल असेट्स, हमारी सोच एंड हमारी क्रिएटिविटी. सम आर साइंटिस्ट, सम आर पेंटर, सम आर डिजाइनर, सम आर म्यूजिशियन. कोई पोएम लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई गाना गाता है. मीन्स वी कैन प्रोटेक्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्स कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं. डेट इज कॉल्ड पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैराइटीज एंड कॉपीराइट्स. As Dr. Shailendra sir said about the patent rights, we will not discuss about the patent rights, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपको बता दी गई हैं. पेटेंट कैसे फाइल किया जाता है, कितनी फीस लगती है, किस तरीके से प्रोसीजर किया जाता है. बट स्टिल आई विल शो यू द सम एग्जांपल ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन फॉर टॉय इंडस्ट्रीज, जो मैंने प्रिपेयर किया था. क्योंकि टॉय इंडस्ट्रीज जो आप बचपन में टॉयज से प्ले करते होंगे, वो सब के सब पेटेंटेड थे और किसी ना किसी टाइम पे उससे काफ़ी सारी रॉयल्टी गेन की गई है, उससे काफ़ी सारे पैसे गेन किए हैं. Means it is not necessary your invention must be a complex. You will get a patent rights on a simple invention also. जैसे आप डिजाइन काफ़ी सिंपल इन्वेंशंस के लिए ले लेते हैं, सिमिलरली लाइकवाइज यू विल गेट ए पेटेंट राइट्स आल्सो ऑन ए सिंपल इन्वेंशन. बट द मोस्ट थिंग इज दैट कि दैट मस्ट बी फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. पेटेंट राइट्स लेना बहुत आसान है, लेकिन हमारी कंट्री में फोबिया है कि हम नहीं ले सकते, या हमारी इन्वेंशन इतनी नहीं कैसे हो सकती है,
मैं कल पेटेंट सर्च कर रहा था फार्मास्यूटिकल के अंदर, और आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, उन्होंने हार्ड जेलाटिन कैप्सूल को विदाउट पॉलीमर इस्तेमाल किया है, पॉलीमर बनाया था, और उस पेटेंट एप्लीकेशन को पेटेंट ग्रांट कर दिया गया है पेटेंट ऑफिस से इन 2022, और विद इन 1 ईयर वो पेटेंट ग्रांट हो गया है। किसी महाराष्ट्र से किसी फार्मेसी कॉलेज ने उसको अप्लाई किया था। सिमिलरली लाइकवाइज इफ यू हैव आइडिया इन योर माइंड, आपके माइंड में भी कोई आइडिया है जो पेटेंट के लिए है, जरूरी नहीं है कि आपको भी मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, बहुत सारी रिसर्च होनी चाहिए तभी मेरा पेटेंट ग्रांट होगा। ठीक है, आप डिजाइन में आप लोग परफेक्ट हो गए हो, अभी काफी सारे आपके डिजाइन रजिस्टर्ड हो गए, बट नाउ टाइम हैज कम टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन। असली रिसर्चर आप तभी बनोगे जब आप अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करोगे। पहले क्या होता था, जैसे किसी इंडस्ट्री से पूछा जाता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो वो बताए मेरे पास इतने मकान है, इतनी बिल्डिंग्स है, इतना मेरा टर्नओवर है। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक रिसर्चर की आइडेंटिटी होती है कि आपके पास कितने पेटेंट्स हैं, कितने रिसर्च पेपर हैं, और कितनी जगह आपने कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश किया है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है, एक इन्वेंटर की, एक रिसर्चर की, एक स्कॉलर्स की। पेटेंट सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें कुछ सेक्शंस हैं नॉन पेटेंटेबल के लिए, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। वी विल स्किप ऑल दीज स्लाइड्स। जैसे आपके पास ये अकोनिक टॉय एंड गेम पेटेंट्स है, आपने बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे बच्चे इसके साथ खेलते हैं। इसका जो पेटेंट है 1983 में मिला था यूएस के अंदर, एक है लॉजिकल टॉयज के नाम से, और इसको जीनियस बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी फाइल किया गया था। नाउ यू विल थिंक अबाउट दैट कि इसके अंदर क्या इनोवेशंस है। एक सिंपल थिंग्स है, इट्स ए ट्रिक्स टू अटेम्प्ट, इट्स लाइक ए मैजिकल ट्रिक्स और यू कैन से, बट इंडियन पेटेंट एक्ट में क्या है कि हम मैथमेटिकल मॉडल्स को पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, बट वी कैन फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स के लिए हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं, बट गैम्बलिंग मशीन्स के लिए पेटेंट फाइल नहीं होता, बिकॉज दैट इज ए प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3B। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइमरी यूज विच इज सीरियस prejudice caused to human morality and the system, such type of things patent will not be granted। तो जब भी आप अपना पेटेंट फाइल करें, आपको ये बेसिक्स आइडिया लगाना है कि आप उसको किस पर्पस के लिए क्लेम कर रहे हैं। सेकंड, दिस इज ए आइकॉनिक टीम सुपर सोकर्स। इसका भी जो पेटेंट है 7 मई 1987 को मिला था। नाउ यू कैन सी कि ये जो सिंपल सी जो टॉयज हैं, प्लेइंग गेम्स हैं, इसके ऊपर भी पेटेंट राइट्स लिए गए हैं, और इसको सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया, उसको इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी निकाली गई, उसके बाद इसको हमने पेटेंट के लिए ग्रांट किया गया। नाउ दिस इज द गेम बॉय के नाम से एक मशीन आती थी जो आपने भी खेली होगी, जिसके अंदर जो बाद में मोबाइल फ़ोन में भी कन्वर्ट हुई, जो नोकिया के मोबाइल फ़ोन आते थे पहले, उसमें इस तरीके की गेम्स को यूज़ किया जाता था, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आप देखिए जो टेक्नोलॉजी है कितनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आप मार्केट में जब जाते हैं, आप देखिए कि कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन आया है कैमरे के साथ, अल्टीमेटली वो आप मोबाइल फ़ोन कैमरे के साथ नहीं जाते, आप कैमरा लेने जाते हैं जिसके साथ मोबाइल फ़ोन वर्किंग है। मीन्स आप कभी भी कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं, उसमें आप कॉलिंग नहीं चेक करते, उसमें आप उसके फीचर नहीं चेक करते, आपको सिर्फ कैमरे के फीचर से मतलब होता है। इट मीन्स लाइक दैट कि यू आर परचेजिंग ए कैमरा इन विच फोन इज इनबिल्ट। तो पर्टिकुलरली यूज क्या है कि कैमरे इंडस्ट्री में चेंजेस आया, नॉट इन दी टेलीफोन इंडस्ट्रीज आल्सो। दिस इज द another example of the toy games, slinky toys। this is a very simple invention कि आप इसको किस तरीके से बनाया, आपने इसकी क्या क्या पर्पसेज हैं, क्या यूज है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस पेटेंट इज ग्रांटेड इन 1947 बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड ऑफिस। प्रोसीजर इज ऑलरेडी डिस्कस बाय सर कि पेटेंट को ग्रांट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर किया जाता है। स्टिल आई विल रिव्यू फ्यू थिंग्स कि सबसे पहले आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या होती है, मान लीजिए आपके माइंड में एक आइडिया आया, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, बट आपको हेल्प चाहिए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट की भी और या किसी अदर फील्ड की। आप सोचते हैं कि अगर हमने ये आइडिया किसी के साथ डिस्कस किया, किसी साइंटिस्ट के साथ, किसी रिसर्चर के साथ, तो हमारा जो पेटेंट है
वो लीक हो जाएगा या डिस्क्लोज हो जाएगा, या वो पर्सन जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो कोई रिसर्च पेपर ना पब्लिश कर दे। सो इन दिस प्रीव्यू आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के थ्रू फाइल कर सकते हैं। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में क्या होगा कि आपका आइडिया पेटेंट ऑफिस में लॉक हो जाएगा, बट यू हैव टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग। 12 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। देन योर पेटेंट विल बी प्रोसीड फॉर द फर्दर प्रोसेस। अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 12 मंथ्स नहीं सबमिट करते तो आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा और फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा। उसके बाद पेटेंट आपका 18 महीने के बाद 18 मंथ्स के अंदर ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा एट दी पेटेंट ऑफिस जनरल, जो एवरी फ्राइडे को रिलीज होता है, उसमें आपका पेटेंट ऑफिस पब्लिश हो जाएगा। बट इफ़ यू डोंट वांट टू वेट फॉर द 18 मंथ्स, आप चाहते हैं कि हमारे जो पेटेंट है वो 18 महीने से पहले ही हो जाए, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि आप अर्ली पब्लिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं विद द फॉर्म 5 फॉर्म 9 विद द पेइंग फीस ऑफ ₹2500। आप जैसे ही ₹2500 गवर्नमेंट को फीस पे करेंगे, विद इन 1 मंथ आपका पेटेंट पब्लिश हो जाएगा पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे। उसके बाद विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग, मीन्स 48 महीने के अंदर अंदर जिस दिन से आपने पेटेंट फाइल किया, आपको अपनी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी पड़ेगी कि अब हमारे पेटेंट को एग्जामिन कर लिया जाए कि हमारे पेटेंट के अंदर कितनी नोवेल्टी है, कितनी इन्वेंटिव स्टेप है। उसके बाद पेटेंट ऑफिस आपको एक रिसर्च एग्जामिनेशन रिपोर्ट देगा, डेट इज कॉल्ड FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। आपने उसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद अगर पेटेंट एग्जामिनर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाता है, देन योर पेटेंट विल बी ग्रांटेड, तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। सो ऑल दिस प्रोसेस नाउ टेक्स 1 ईयर। अगर आप सारे फॉर्म टाइम पे सबमिट करते हैं, मीन्स अगर आप 48 मंथ्स की वेट नहीं करते, आप एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग अपनी फाइलिंग सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो आपका जो पेटेंट है वो विद इन 1 ईयर ग्रांट हो जाएगा। और जैसे अगर आप कोई M.Pharm के बच्चों को टीच करते हैं या कोई आपके अंदर PhD करता है, तब भी आप इस तरीके के पेटेंट सर्च रिपोर्ट तैयार करवाएं कि वो कल को हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकें। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक अनदर पैरामीटर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। जैसे मान लीजिए आपके माइंड में कोई साइन आया, वर्ड्स आया, लेटर आया, कलर ऑफ कॉम्बिनेशन आया, रिप्रेजेंटेशन आया, वी कैन प्रोटेक्ट बाय द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यापार चिन्ह। कोई ऐसा मार्क, कोई ऐसी आइडेंटिटी जिसकी वजह से लोग आपको पहचान सके, दैट इज ए कॉल्ड ट्रेडमार्क। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, बट हर 10 साल के बाद हमें से रिन्यू करवाना पड़ता है। देयर आर 45 क्लासेज ऑफ ट्रेडमार्क। अगर आपको सोप बेचने हैं क्लास 3 में, मेडिसिन बेचनी है क्लास 5 में, मशीन टूल्स क्लास 7 में, ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्लास 35 में, कोई आपको कोचिंग सेंटर खोलना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना है, कोई म्यूजिक एंटरटेनमेंट के लिए खोलना है, तो वो आपको क्लास 41 में उसको फाइल करना पड़ेगा। जितने भी टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं क्लास 42 में, मोबाइल ऐप्स 42 में, ऑल टाइप ऑफ रेस्टोरेंट एंड सर्विसेज कम क्लास 43, एंड ऑल टाइप ऑफ NGOs एंड सोशल सर्विसेज क्लास 45। तो मीन्स ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिवाइड किए गए हैं, किस क्लास में कौन सा बिजनेस कवर किया जाएगा। मार्केट में क्वेश्चन नोटिस आता है कि कृपया करके हमारा ब्रांड नेम मत इस्तेमाल कीजिए, अगर आपने किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दिस इज जस्ट ए प्रिकॉशंस टू अवेयर द पब्लिक। सिमिलरली लाइकवाइज कि अगर आपको ट्रेडमार्क सर्च करते हैं टॉय इंडस्ट्रीज के लिए, टॉय इंडस्ट्रीज के जो ट्रेडमार्क होते हैं, दैट कम्स इनटू क्लास 28। ट्रेडमार्क सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि वो जेनरिक वर्ड नहीं होना चाहिए। जेनरिक वर्ड आप कहें कि आप टॉय सेल कर रहे हैं और आपको टॉय के नाम से ही वर्ड दे दिया जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे यू कैन सी टॉय टेस्टिक। टॉय टेस्टिक इज ए कॉइन वर्ड, और इसको अपने तरीके से उन्होंने कॉइन वर्ड बनाया कि दो अल्फाबेट को उन्होंने कुछ अल्फाबेट्स को जोड़ के, दो वर्ड्स को जोड़ के एक न्यू वर्ड को क्रिएट किया है। एंड उसके बाद यूवी टॉयज, इंडी टॉयज, अरब टॉयज। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द trademarks which is filed under class 28. So this is the basic example of the trademarks. ट्रेडमार्क का सिलेक्शन कैसे होता है? ट्रेडमार्क, द सिलेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने नेम को सिलेक्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नेम को जेनरिक वर्ड में लॉन्च करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो अपने ब्रांड नेम को काफ़ी जेनरिक मार्केट में, जिनके रियल जूस इज नॉट रजिस्टर्ड येट because that is a generic word, and obviously that is not a real juice which you are drinking. So नेम का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी से डिफरेंशिएट कर सके। लाइक कोडैक एंड डाल्डा, सच देयर इज नो मीनिंग इन द डिक्शनरी कोड एंड डाल्डा।
किसी भी जगह के नाम पे, किसी भी लोकेशन के नाम पे, किसी भी गुरु के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे कोई भी ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं होता। कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होता है, नॉट द रिलीजियस वर्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उस नाम से तो मिला हुआ है, वो उस नाम पे नहीं मिला हुआ, उसके पैटर्न पे मिला हुआ है, उसके राइटिंग स्टाइल पे मिला हुआ है। अगर आप चेक करेंगे, जैसे पैराडाइज है फॉर एग्जाम्पल, पैराडाइज इज ए डिस्क्रिप्टिव वर्ड, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। अगर आप शिव के नाम से चेक करेंगे, बहुत सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, नॉट फॉर दी ए पर्टिकुलर वर्ड ऑन दी शिव। अवॉइड विच डिस्क्राइब दी जोग्राफिकल नेम, लाइक यमुनानगर फार्मास्यूटिकल, यमुनानगर सॉफ्टवेयर कंपनी, यमुनानगर साल्ट। अब जैसे हरियाणा का देसी घी आता है, हरियाणा के ऊपर नहीं मिल सकता उसको राइट्स, बिकॉज that is a which describe the geographical names. Avoid which describe the quality of the goods, like best, perfect, super, premium, gold, silver, number one. So these all are the describing the quality of the goods and the characteristics of the good. Such type of brand names are not granted by the trademark registry. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रेडमार्क। पहले आप अपना ट्रेडमार्क सर्च करेंगे थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, उसके बाद आप ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं और ऑफलाइन फाइलिंग कर सकते हैं। आफ्टर दैट योर ट्रेडमार्क विल बी एक्सेप्टेड इन द जर्नल। इफ नो ऑब्जेक्शन विल बी कम, देन इट विल बी एक्सेप्टेड। ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होगा जर्नल में। जर्नल में एक्सेप्ट होने के बाद 4 मंथ्स का टाइम होगा। इफ एनीबडी हैविंग ए प्रॉब्लम विद योर ब्रांड नेम, देन दे विल गेट ए अपोज। जैसे कुछ कंपनीज है फार्मास्यूटिकल, मैं आपको बताता हूँ, जिनका एक ट्रेंड है कि वो अपोज करते ही करते हैं। सपोज आपके ब्रांड नेम में काइंड वर्ड यूज़ किया तो मैन काइंड आपको रोकेगा ही रोकेगा। अगर आप सिर्फ फिक्सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपने सेफ वर्ड यूज़ किया तो पक्का आपके ऊपर अपोजिशन आएगा। अगर आपने मोक्सिक्लैब बेच रहे हैं तो आपने मोक्स वर्ड यूज़ किया है तो आपके ऊपर भी अपोजिशन आएगा ही आएगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर सेलेक्टिंग ए नेम फॉर दिस स्पेसिफिकली फॉर दी फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड। जैसे आपने नोवा वर्ड यूज़ किया है तो नोवा कंपनी आपको रोकेगी। कई लोग पतंजलि के नाम से ही कंपनी लगा के बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली बाबा रामदेव जी को बुरा लगेगा, उन्होंने आपकी कंपनी को अपोज करना है। मे बी इट्स रिलेटेड टू सम गुरु नेम, बट द पॉपुलैरिटी गेम्स बाय दी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। सो कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें खुद कंपनी, आपने देखा होगा पतंजलि का एक ब्रांड नेम लॉन्च हुआ था कोरोना के टाइम में जो उनकी मेडिसिन थी, एंड दैट ब्रांड नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सम बाय अदर कंपनी नेम्स, पर मद्रास हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे भी लगा दिया था। स्टिल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उसके ऊपर वेव ऑफ ले लिया था। सो दिस ऑल आर द थिंग्स कि आप किसी कोरोनिल के नाम से वो ब्रांड नेम था जो ऑलरेडी किसके नाम से रजिस्टर्ड था। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपको इशू होता है आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस। दिस इज द वेबसाइट ऑफ आईपी इंडिया। यहाँ पर जाकर आप खुद भी अपना ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पसेस। लाइक फॉर एग्जांपल डिस्प्लिन, आपने डिस्प्लिन के लिए ब्रांड नेम सर्च किया कि जो ब्रांड नेम डिस्प्लिन से स्टार्ट होते हो, लाइक डिस्प्लिन एक्स, डिस्प्लिन सीवी। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल्स। इसके अंदर जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी 4500 रुपीज़ फी करनी पड़ेगी अगर आप इंडिविजुअल हैं, स्टार्टअप हैं और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, मीन्स इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इन MSMEs। और आपको ₹10,000 पे करने पड़ेंगे अगर आप लार्ज एंटिटी हैं थ्रू ऑफलाइन मोड। इंडस्ट्रियल डिजाइन बेसिकली आर ग्रांटेड फॉर ऑर्नामेंटल फीचर, एस्थेटिक फीचर। कोई चीज़ बाहर से कैसे दिखाई दे रही है उसके एस्थेटिक फीचर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड नोबडी कैन यूज सेम टाइप ऑफ एस्थेटिक फीचर्स ऑफ दैट पर्पस। बस इसमें हम टेक्निकल फीचर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको टेक्निकल फीचर प्रोटेक्ट करना है देन यू हैव टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन। These all are the example of the consumer product which is protected by the industrial design, and this is the example of the toy industries कि टॉय में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टॉयज को इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। एक टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्पेशली अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला था, MSME मंत्रालय से भी काफ़ी लेटर आए थे कि भारत के अंदर टॉय बनाए जाए, क्योंकि आप देखिए 80% मार्केट जो है टॉय की वो चाइना से आती है, और चाइना कभी भी किसी कंट्री से कोई रिलेशनशिप खराब होते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है या उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्पेसिफिकली टॉय इंडस्ट्री के लिए किया गया कि आप इंडिया में इस तरीके के टॉयज बनाएं जो इजी टू ऑपरेट हो और इजी स्पेशली चीप हो, क्योंकि जो मार्केट में प्रोडक्ट चाइना से आता है बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी
वो सस्ता होता है लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर उसको हाई प्राइस पे देता है बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज। सो उसके लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, दैट ऑल आर कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पैकेजिंग कंटेनर्स को भी आप रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन। किसी टाइप का भी पैकेजिंग कंटेनर ऑफ फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए, नॉन फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए भी आप यू कैन प्रोटेक्ट बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइन। टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी, जितने भी ज्वेलर्स होते हैं, पीपी ज्वेलर, तनिक ज्वेलर, ये सब अपने डिजाइन को रजिस्टर करवाते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये अपना ब्रांड कोई भी मार्केट में लॉन्च नहीं करते। So these all are the example of the industrial design. I think PPT में कुछ issues हैं। Anyhow, we can discuss without PPT. So next is about the industrial designs के बाद आता है geographical indication. Geographical indication basically are granted on three grounds. Which one is the popular for the natural goods, manufactured goods और agriculture goods. कोई जगह की कोई स्पेसिफिकली फेमस चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे आपके यहाँ पर दो चीज़ें बहुत फेमस हैं यमुनानगर के अंदर, एक तो प्लाईवुड इंडस्ट्री और दूसरी स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। अगर दे पीपल कैन अप्रोच बाय टू द पेटेंट ऑफिस एंड ट्रेडमार्क ऑफिस रिगार्डिंग द जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेशन, then they can apply, but they have to prove all the evidence that they are using from a long back about the specifically characteristic and specifically quality. Then they will get a geographical indications. So this is the benefit of the geographical indication that nobody can use same type of logo for any type of purposes. Like आपने देखा होगा दार्जिलिंग टी एंड जितने भी हमारे पास बासमती राइस, these all are example of the geographical indications. जैसे हरियाणा के पास अभी फुलकारी है जिसमें म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है, पंजाब का भी है एंड राजस्थान का भी, 3 स्टेट का उसके ऊपर राइट्स है। बट हरियाणा का अकेला कोई भी जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड नहीं है। 2 यहाँ से फाइल किए गए थे और जो रेफ्यूज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द एविडेंस एंड सम अदर रीजंस। सो जोग्राफिकल इंडिकेशन आप अगर आप गोवा एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ देखिए स्पेसिफिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टॉल लगा रखा है जहाँ पर सिर्फ जोग्राफिकल इंडिकेशन ही प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द जीआई आइडेंटिटी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काफ़ी फोकस करती है कि फैक्ट्री के लोगों को जीआई प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए और उसको परचेज किया जाए। सेकंड, इसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट बेसिकली टू प्रोटेक्ट दी अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लाइक सर्वे मेथड्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। देन ट्रेड सीक्रेट के थ्रू हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं या कुछ और एग्रीमेंट के थ्रू साइन कर सकते हैं, लेबर लॉ एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉइज जो आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी और पर्सन को सेल आउट ना करें। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द trade secrets. So this is all about the intellectual property rights. If you have any question related to IPR, you are free to ask me. Thank you. Thank you so much, sir, for such an informative session on IPR and latest innovations. I hope after this lecture, the participant will be aware of
different IPRs along with the basic difference and filing procedure of each. Once again, thank you so much, sir. Now I request our respected principal, sir, Professor Dr. Anurag Bhargavji, please present vote of thanks. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Dr. Shailen, Dr. Rahul, my dear colleagues, and my dear students, I, on behalf of Chaudhry Devilal College of Pharmacy and its management, extend my thanks to Dr. Shailen and Dr. Rahul for such an informative and elaborative lecture on IPR and how to file it. Thank you very much, sir, for sparing your time for our institute. Thank you, sir. Thank you very much. I Thank you, also sir. would like to invite you to college for one offline lecture on IPR and how to file it. Will it be possible, Rahul sir? Dr. Yes, Shailen sir? sir. Yes, sir. Sure, na? So we can plan it in near future. Sure, sir. Sure, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Shailendra, sir. Okay, sir.